ओके, वेलकम। आप सभी का स्वागत है एक और लाइव स्ट्रीम में, जहाँ पर हम देखेंगे स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च। काफ़ी एक्साइटिंग लॉन्च। फिर से हमें देखने को मिलेगा वर्टिकल लैंडिंग एंड टेक ऑफ फ्रॉम स्पेस एक्स। तो अभी 15 या 20 मिनट के अंदर लॉन्च होगा। लाइव स्ट्रीम चालू है इसरो का, इसरो नहीं स्पेस एक्स का, सॉरी। तो लेट्स सी। तो इस मिशन का नाम रखा गया है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैकिंग लेयर 01। और इस पेलोड जो भेजा जा रहा है उसका मास है 5 टन के आसपास। और ये भेजा जा रहा है सी लेवल से 970 किलोमीटर के ऑर्बिट पे। एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसकी इंक्लिनेशन है 89.5 डिग्री। और ये भेजा जा रहा है, ये लॉन्च किया जा रहा है स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 ईस्ट, वेदनबर्ग स्पेस स्टेशन, जो कैलिफोर्निया में है। तो ये डिटेल्स हैं। सैटेलाइट की इमेज नहीं मिली, शायद हो सकता है बाद में रिलीज़ करें। लेट्स सी, देखते हैं आज का एक्साइटिंग लॉन्च। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक स्पेस एक्स के लॉन्च में। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऑफिशियल स्पेस एक्स की लाइव स्ट्रीम। म्यूज़िक काफ़ी अच्छा यूज़ किया है और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्पेस एक्स का लोगो। अभी मैंने जस्ट ऐड किया, लेकिन गलती ये हो गई कि ब्लैक ऐड कर दिया ओके, लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम। बस ओके, एंजॉय द म्यूजिक। Vehicle is supersonic. Stage separation confirmed. Dragon, separation confirmed. Stage 1 is transonic. Landing legs have deployed. Oh wow, wow, the quality they provide, god level Thursday, March 30th, 2023, and on your screen is a live view of the Falcon 9 as it waits for its 7:29 a.m. Pacific time launch from Slick 4E from Vandenberg Space Force Base off the coast of California. okay, My name is Jonathan Dweck, and I'm an operations engineer here at SpaceX, joining you from our headquarters about 150 miles south of our launch site. Today's launch marks SpaceX's 221st launch overall, our 22nd launch of the year, and our second launch. हाँ, ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो फैल्कन 9 की लॉन्चिंग है, ये 200 219वां 211वां अभी इन्होंने मेंशन किया था। ऊपर वाले मैंने मेंशन तो किया था, अभी वो घूमने दीजिए फिर आएगा। Today's mission is in support of the SDA's overall constellation, called the Proliferated Warfighter Space Architecture, or PWSA for short. The Okay. SDA prioritizes दिस इज 215वां लॉन्च ऑफ फैल्कन 9 रॉकेट। इट्स टू मच। with the goal of quickly ओके, 10 मिनट में लॉन्च होने वाला है। capabilities to support terrestrial missions through development, fielding, and operation of the PWSA. The payload on board the second stage today, Tranche 0, will allow combatant commands to start to develop their exercise and operational plans around access to data they can expect to receive from future tranches of their constellation. ओके, It's also worth mentioning, at the request of our customer, we will not be sharing any views from the second stage today. And we'll या follow any एज web एक्सपेक्टेड, content या at around the आई फॉरगॉट टू 10 मेंशन दैट। mark, shortly after Falcon 9. हम लोग को फैल्कन 9 का सेकंड स्टेज का जो व्यू है वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कस्टमर का नाम है डिफेंस, भूल गया ऊपर मैंने लिखा था खैर, तो कस्टमर की डिमांड है कि स्पेस एक्स का सेकंड स्टेज की कोई भी ब्रॉडकास्टिंग नहीं की जाएगी। पर कोई बात नहीं, हमें लैंडिंग देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज लैंड होगा यहाँ से लॉन्च होने से लगभग 300 मीटर के आसपास। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। As we ascend, we tilt the engines, technical term being gimbaling, and that turns the rocket horizontally.
We're still going up, but now we're also heading horizontally away from the launch pad. It's what we call a gravity turn. The rocket typically needs to go around 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid being pulled back down to Earth and get into orbit. To help demonstrate this concept, ओके, रॉकेट के बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये रॉकेट लगभग 70 मीटर लॉन्ग है। 2 स्टेज रॉकेट है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में यूज़ किया गया है, जस्ट अ मिनट, ओके, फर्स्ट स्टेज में यूज़ किया गया 9 मर्लिन इंजन और सेकंड स्टेज में भी यूज़ किया है मर्लिन इंजन, लेकिन वो वैक्यूम ऑप्टिमाइज है, सिर्फ नोजल चेंज है। और इसमें फ्यूल यूज़ किया जा रहा है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड कैरोसिन आरपी। जो कैरोसिन है, कैरोसिन को ज़्यादा रिफाइन करेंगे तो JP1 बनेगा, जो जेट प्रोपल्सन 1, फिर इसको और रिफाइन करेंगे तो RP1 रॉकेट प्रोपल्सन। तो वो ये है RP1। तो इसमें फ्यूल यूज़ किया जा रहा है और एज यूजुअल फर्स्ट स्टेज लैंड होगा वर्टिकली। सेकंड स्टेज की ब्रॉडकास्टिंग नहीं दिखाई गई। इसमें पेलोड का मास है 5 टन और इस मिशन का नाम रखा गया है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैकिंग लेयर 01। ऊपर दिख रहा है वाइट कलर का फेयरिंग है और या इंटरेस्टिंग कुछ बता रहे हैं, देखते हैं। Then, at liftoff and through ascent, the fairing will also shield against aerothermal loads and heating. Once we reach the vacuum of space, we will jettison the fairing, and the second stage will continue on its journey into orbit. The fairing halves supporting today's mission are flight proven, with one half flying for its 6th time and the other half flying for its 4th. Below the payload fairing is the second stage, which is responsible for propelling the payload to its drop-off orbit in space. Not only does SpaceX's second stage look similar to the first stage, that larger stage below, it also has the same diameter, uses the same metal in the tanks, same computers, same propellant, and nearly the same engine. This allows us to use similar tooling, design, and systems, which results in greater efficiency and reliability. The first and second stages are connected by the interstage, which houses the pneumatic pushers that allow stage separation during flight. The interstage also houses the second stage engine, called the Merlin vacuum engine, or MVAC engine for short. And as a reminder, for today's launch, we will not be sharing any views from the second stage at the request of our customer, and we'll be ending our webcast at around the T+8 minute mark, shortly after Falcon 9 makes its way back down onto land. Okay. Making our way down the rocket, the bottom 2/3 of the vehicle is the first stage and is the primary part of the rocket that gets reused multiple times. On the bottom of the first stage are 9 Merlin M1D engines that accelerate the vehicle through Earth's atmosphere and that enable landing back. लिफ्ट होने के बाद सिर्फ 8 मिनट हम लोग को मिलेगा रॉकेट को देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद ये ब्रॉडकास्टिंग बंद कर देंगे। पर हमें लैंडिंग देखने को मिलेगा, वो मोर एक्साइटिंग होगा। तो लेट्स सी। What you're seeing on your screen now? If successful, this would mark our 183rd overall successful recovery of an orbital class rocket, including both Falcon 9 and Falcon Heavy first stage landings. So far, we're at T-5 minutes and counting, and all systems are go for an on-time liftoff. Falcon 9 tanks are pressurizing for strongback retract. The range is currently ready to support. The weather is still a 40% chance of violation, but we're still proceeding with an on-time liftoff today. And the vehicle and payload continue to be healthy. If for some reason we're unable to launch today, we do have a backup opportunity tomorrow at the same time. Okay. Next up, the truss structure next to the vehicle, known as the transporter erector or TE, will start to retract. The transporter erector is that truss structure next to the rocket that is used to roll out and to route propellants and electrical power to the vehicle in preparation for launch. In preparation for retraction, as the TE clam's arms will open, as you're seeing on your screen now, and the transporter erector will then begin to pull away from the rocket slightly. Then, at T0, hydraulics pull the transporter erector even further away from Falcon 9 as it lifts off. And as you can see, the TE has started. ओके, वो थोड़ा सा लगभग 10 डिग्री के आसपास। SpaceX 5 डिग्री, At this I think. point in the countdown,
Both the first and second stages are nearly fully loaded with 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen, or LOX. Okay, 3 Those minutes to white go clouds that you're for the seeing launch. around the outside of the vehicle are completely normal. During propellant loading, we vent cold gas that forms above the LOX tank surface, and what you're seeing is a result of that cold gas coming in contact with the warmer California air and condensing. Both first stage and second stage should finish loading propellant at about a minute apart from one another. First stage finishing up at T-minus 3 minutes, and second stage at around T-minus 2 minutes. Then at T-minus 60 seconds, Falcon 9 will be in start. Stage 1 LOX load is complete. नहीं 10 डिग्री से तो ज़्यादा ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिग्री एंगल है। 5 डिग्री शायद फायरफ्लाई एरोस्पेस में बोला गया था, जहाँ तक मुझे याद है। जो आपको स्टैंड दिख रहा है वो पीछे उड़ जाता है ताकि लिफ्ट ऑफ हो सके। या ओके, The SDA Tranche 0 payload continues to be healthy, and the Falcon 9 team is currently tracking no issues on the rocket. So let's listen in to the terminal count. 2 मिनट। We're approaching LOX load completion on our second stage in around 30 seconds from now. Beautiful day up in Vandenberg. If you're in the area, definitely check the skies as Falcon 9 makes its way. Should be some great views. But I'm not in Vandenberg. That's why I'm streaming. Expecting that call out of stage 2 LOX load completion momentarily. Stage 2 LOX load is complete. Okay. And there you heard it. LOX load is now complete on our second stage. सेकेंड स्टेज में As a लिक्विड reminder, those ऑक्सीजन white कंप्लीट हो clouds गया। that you see venting from our TE, that's completely normal. Next up, we're approaching startup. That'll occur in around 30 seconds from now. ओके, अब मैं स्ट्रीमिंग की वॉइस थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ ताकि आप इंजॉय कर सकें लॉन्च को। तो लेट्स सी, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा Shot of our launch site. हूँ। ओके, नाउ Falcon 9 is in startup. There you heard that call out. Falcon 9's onboard flight computers have taken control of the launch countdown. Now we're just waiting to hear from our launch director. LD is go for launch. You heard the call out there. Go All for systems launch. are go for launch of Falcon 9 and Space Development Agency Tranche 0. Let's sit back and watch as Falcon 9 heads into space. T-minus 30 seconds. Fifteen seconds. ओके, लेट्स गो, T-minus 10, लेट्स 9, गो 8, 7, 6, गो 5, गो 3, 2, abort. अबॉर्ट। Abort. Launch abort is running. ओके, मिशन अबॉर्ट हो गया। आई थिंक टी टैब की प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमेशा ऐसे टाइम पे टी टैब की प्रॉब्लम होती है। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम होती है। Yeah. Am I good to go? If you've been following along, you know we had an abort during the launch countdown at around the T-minus 3 second mark. Prior to that countdown, countdown was proceeding nominally. Now please stand by while we check in with the teams to see if we can get more information. ओके, थोड़ी देर वेट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो। लेट्स सी टी टैब क्या है कि This is Launch Director on Countdown 1. We've had an abort. Currently assessing the situation. The vehicle is healthy. ओके, व्हीकल इज हेल्दी। ओके, जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि और भी लॉन्चेस में यही सेम प्रॉब्लम हुई है कि
इंजन को इग्निशन के लिए ये यूज़ करते हैं टी टैब, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, फिर ख़त्म हो जाता है, पता नहीं, आई डोंट नो। पर देखते हैं अभी, मैं तुक्का लगा रहा हूँ। प्रॉब्लम उन्हें ही पता होगी वैसे तो। लेट्स सी, देखते हैं। अगर ये आज मिशन लॉन्च नहीं हुआ तो कल सेम टाइम पे लॉन्च होगा फिर से, तो हम कल फिर सेम टाइम पे मिलेंगे। और अगर शायद अभी लॉन्च करते हैं तो और भी अच्छी बात है, देखते हैं। If you've been following along, you know we had an abort during the countdown at the T-3 second mark. We just heard from our launch director. The vehicle and payload do remain healthy. Keep in mind the purpose of the countdown is to help us catch potential issues prior to flight. There are 1,000 ways a launch can go wrong, and only one way it can go right. Given that, we are overly cautious on the ground, and if the team or the vehicle sees anything that just looks even slightly off, they'll stop the countdown. Again, the vehicle and the payload are in good health. This will end our launch attempt for today. The next launch opportunity is tomorrow at the same time, 7:29 a.m. Pacific. ओके, Hopefully you'll join us. Thanks for joining us today, and we'll see you next time. ओके। तो आज की स्ट्रीमिंग बंद हो गई, तो हम भी बंद करते हैं। तो अपडेट ये है कि मिशन अबॉर्ट कर दिया गया है। रीज़न बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि स्पेसएक्स बता ही देता है क्या रीज़न हुआ था। अब ये लॉन्च होगा अगले दिन सेम टाइम पे, हम लोग फिर से मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच अगर आपने पूरा वीडियो देखा, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर। आई एम गोइंग टू एंड दिस स्ट्रीम, एंड once again thank you so much for joining. We will meet very very soon tomorrow same time with the with SpaceX, yeah.